Welcome everyone. Welcome to Odisha Civils. Like previous, we are also going to start our geography environment series for your preliminary understanding, and that is जदि आम देखा कि basically geography and environment questions like previous. सेमती आज भी किसी करिवा. Hope you all are fine, right? So I guess समस्त NCERT पढ़ुथु and other things learnings, and do text me जहाँ भी किसी doubts जिते बड़े होची जहाँ भी whenever some doubts are arise you can pin in the inbox also. We definitely from our end will reciprocate that one जहाँ भी किसी doubts अच्छी clarity. Okay. Also there is also your telegram channel भी अच्छी Odisha Civils, so you can also join there, and whatever queries also you can you can write it very freely, right? So बर्तमान देखिबा कि हमें क्वेश्चंस करिबा प्रीवियस लाइक प्रीवियस जेमते हमें अलगार करथले, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें, that is your series 6 that is your geography questions. Let's know first question करिबा. First question यदि देखिबा, the consider the following statements and select the correct answer using the code given below. प्रथम questions using the code given below. First questions, right? Perchance is an Arabic word. First, perchance is an Arabic word. Second, perchance are sand dunes, and perchance are found in Turkmenistan. एटी जदि हम देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन रे कि फर्स्ट जदि हम देखिबा कि एथरे दिस इज योर बेसिकली आसी तमरो एओलियन लैंडफॉर्म्स, राइट? एओलियन लैंडफॉर्म्स, राइट? एओलियन लैंडफॉर्म्स देखिबा एओलियन लैंडफॉर्म्स रे. So इथे हम जानली कि perchance is an Arabic word, right? Absolutely, it is correct. Perchance is an Arabic word, right? Next, perchance are sand dunes. Absolutely, these are the sand dunes. We can say perchance are also the sand dunes, right? These are the sand dunes. Next, perchance are found in Turkmenistan, right? Turkmenistan जदि देखिबा, Turkmenistan is in Central Asian country, right? This is also. So यहाँ भितर जदि देखिबा, yes, तीनटा जंका correct. If you go for that one, A, B, C, D, right? The three statements are correct. Okay, all are correct. So your answer is your D for Delhi, right? D for Delhi. Next question देखिबा, which of the following is not associated with river action? आ भितर को जिनस आ भितर which is not associated with any river action. Number 1, meander. Number 2, natural levee. Number 3, sand dune, and number 4, yazoo, right? Just okay. So देखिबा एटी या भितरु is not associated, अच्छी not associated with the river actions. Meander, then natural levee, sand dune और yazoo. हैला आ भितर क्वेश्चन जदि देखिबा कोटा नॉर्मली जदि हम देखिबा A B C D मु चॉइस नेबी A B C and D, राइट? आ भितर जदि हम देखिबा all are correct except this one, sand dune. Sand dune meander तो नदी पे हैला. Meander is an activity is formed by the river. Natural levee also the river. आउ एटा देखिबा yazoo. Yazoo also जदि गोटे देखिबा कि small stream of river is also known as your yazoo. Sand dune जदि देखिबा, sand dune is your जदि देखिबा कि sand dune is your formed by glacier. Okay, glacier. Your fluvial glacial deposits, okay, deposits, your alluvial deposits, alluvial sediments, fluvo-alluvial, likely fluvo-alluvial sediments, alluvial deposits,
by glaciers है glacier ही deposit करे so it is देखियो answer is your C is the correct answer right sand रा तुम्हारा glaciers form करे right next the term ventifact is associated with the term ventifact is associated with glaciers, rivers, sea waves and wind actions. Glaciers, rivers, sea waves and wind action. Ventifacts किए देखियो ventifacts right ventifacts जब देखो it is your that is जब देखो answer it is your wind action answer is your D ventifacts right ventifacts is your D for Delhi right D for Delhi okay so एठी में आंसर डी है दिस इज है ए क्वेश्चंस प्राय तो आसी जी बहुत जगह रे राइट एटा दिन देखियो एलओएल लैंड फॉर्म्स एटा बेले तमरो सेमती दिस इज योर फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स दिस इज योर फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स एटा रहला फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स रे दिस इज अगेन एओलियन लैंड फॉर्म्स दिटा रहिछि एओलियन लैंड फॉर्म्स रे क्वेश्चंस प्राय तो से पचार जल्दी है लैंड फॉर्म्स रे क्वेश्चन जदि हम देखियो प्राय तो माने पचार जल्दी लैंड फॉर्म क्वेश्चंस दे आर आस्किंग landforms right अच्छा fourth question देखिवा एटा examine the following statements about the altitude हैला examine the following statements about the altitude and select the correct answer using the code given below या भीतर कौन रहइबो select the correct answer code it is the angular distance between the horizon and the sun प्रथमे हैला angular distance between the horizon and the sun right then it is the angular distance between the horizontal plane and at any point horizontal plane and at any point and dichi and at any point hela at any point at bhi darkar nahi this ya bhitar correct answer ko yes you can answer pacharchi kaha bhitare altitude examine the following statement about the altitude giving the code altitude upare pacharchi question ta yes anyone can say altitude upare question pacharchi anyone can say it is the angular distance between the horizon and the sun pratham question hela second question hela it is the angular distance between the horizontal plane and any point right ठीक अछि कोन हमें देखिबा feel free to do mistake yes anyone else जे जण अच्छा everyone can attempt this one angular distance between the horizon and the plane and the sun pratham wala horizon and the sun you said it as B is the answer yes B douchon jane answer anyone any other good B douchon that means only 2 is correct any other answer अच्छा जदि हमें आंसर देखिबा प्रथम देखिबा इट इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द होराइजन एंड द सन दिस इज करेक्ट काहे कि होराइजन और सन भितरे होराइजन और सन भितरे जदि देखिबा अल्टीट्यूड ता सब बळे वर्टिकल ओवरहेड धरा जाय एंड ऑफ कोर्स विथ रेफरेंस टू सन सो जदि देखिबा कि एंड होराइजन एंड द सन दिस इज आल्सो करेक्ट सेकंड जदि देखिबा इट इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द होराइजंटल प्लेन एट एनी पॉइंट दिस इज आल्सो करेक्ट राइट दिस इज आल्सो करेक्ट so both the statements are correct jodi hame dekhiba neither A neither B neither D answer is C both one hala both jodi hame dekhiba both are correct these are right both are correct dita janga correct achi right this is correct okay next question dekhiba which among is the third longest river in Asia re third longest ke Mekong Brahmaputra, Yangtze, and the Yellow River. Okay, Brahmaputra, Mekong, Yangtze, and बढ़िया question and the Yellow River. किया भितरे third. Yes, answer दियो. Third longest river in Asia. बढ़िया answer. समझते everyone participate. I would ask everyone to participate. कोटा
थर्ड लॉन्गेस्ट आम जानते मुझे पचार थर्ड लॉन्गेस्ट व्हाई आई सेड ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस देले सो दैट यू कैन हैव एन प्रैक्टिस एंड यू नो अच्छा आंसर दोचो डी येलो रिवर ओके यस अदर्स येलो रिवर दोचो यस एनी अदर देखो जदि आंसर आमे देखिबा आंसर की रहइबो एटी थर्ड लॉन्गेस्ट भितर आमे जानछथि एशिया रे सबटु लॉन्गेस्ट हला यांगजे हला यांगसी कियांग हला सबटु योर लॉन्गेस्ट रिवर नंबर 1 राइट यांगसी कियांग एटी यदि आंसर देखिबा एटी आंसर हबो योर ए राइट आंसर हबो योर ए दिस इज योर ए दैट इज योर मेकोंग रिवर राइट मेकोंग इज द करेक्ट आंसर अच्छा नाउ वेयर इज मेकोंग थर्ड लॉन्गेस्ट मु कहली हला मेकोंग हला तमरो थर्ड लॉन्गेस्ट जदि हम देखिबा इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट राइट Mekong is the Southeast Asian. Mekong flows in South Asian river. Southeast Asian river. है Mekong जब देखियो, it is the है Southeast Asia रे Mekong flow करছে. It is Southeast Asian river completely. है Atlas देखियो, it is completely Southeast Asian river. So number 1 हमरो ए दिटा देखियो अंक भीतर ब्रह्मपुत्र यदि तुमको बहुत जण मारथो ब्रह्मपुत्र एब्सोल्युटली नो वियतनाम रे खाली जाइनी मेकोंग रिवर कंप्लीटली फ्लोज फ्रॉम मियांमार रो आसी मियांमार रो ने की बहुत सारा मियांमार लाओस कंबोडिया थाईलैंड वियतनाम लास्ट को ड्रेन हिची नियर द कोस्ट ऑफ योर वियतनाम एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया आंसर ठीक अछि कोटु कोटु फ्लो करछि जदि हम देखिबा मेकोंग रिवर फ्लो करछि कोठी मेकोंग रिवर फ्लोज को जगह निज निज एटलास रे देखो फ्लोज इन कोठी बाहर छि प्रथमे म्यांमार देन लाओस को कंट्री देखि से क्रॉस कर छि म्यांमार लाओस देन वियतनाम थाईलैंड समस्त को टच कर छि एंड कंबोडिया बट जदि तमे देखुछो हला से ड्रेन कर छि कोठी वियतनाम पाखरे हला एशिया रो सबटु लॉन्गेस्ट रिवर हला जदि हम देखिबा दिस वन योर यांगजे सेकंड हला तमरो येलो रिवर ठीक अछि ये हला पाखा पकी यांगसी कियांग जदि देखिबो हला 6400 ठीक अछि दिस इज हला यांगसी कियांग देन सेकंड रास येलो रिवर थर्ड रास तमरो मेकोंग रिवर मन रख नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करिवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हला जते बेले ए टाइप रो क्वेश्चंस तमे डील करूछ मन रख सब बेले मन रख Atlas खोलिबो and match this one. वर्तमान to be very honest, regional geography questions वर्तमान prelims रे बहुत गुडे पकोजन and this is the proper time that you can go for that one, right? ए समय जते तमे revise करियो it will more help you out. Basics तमरो आउरी memory concretize हबो. Okay? आ सब बेले match don't try to mug up. See match करो rationally जिंसरा को मन रखो केबे भी भूलिबो, right? और उल्टा आउरी हेल्पफुल होबो जतले तमे आउरी किछ अलगा किछ क्वेश्चंस ता संगे करूछो नेक्स्ट हला अलगा जतले करूछो सेतले तुमको सेगुडा भी सॉल्व करे इजी रहबो 6 नंबर क्वेश्चन करो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ग्लेशियर फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लेशियर इज एन क्लोज सिस्टम ऑफ आइस नेक्स्ट वैली ग्लेशियर is a continental glaciers are two main types of glacier third ice age affects the isostatic adjustment of the land fourth the outwash plain is associated with the valley glacier outwash plain is associated with the valley glaciers which among the following is not correct ini answer dabo kiya bhitor correct no yes anyone bhala abar question dechi not correct एमएस जणे के अछन करचन टाइप ओके वेरी मोस्ट वेलकम कोन हो आंसर ता निजे देखि माने पढी के को नॉट करेक्ट एनीवन कैन से यस आंसर जदि हम देखिबा भितर नॉट करेक्ट ग्लेशियर एटा देला ग्लेशियर इज ए क्लोज सिस्टम एब्सोल्युटली रॉन्ग दिस इज नॉट करेक्ट बाकी वैली ग्लेशियर इज इन कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स और टू और माउंटेन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट
Ice age affects the isostatic adjustment. Isostatic adjustment balance. That is also correct. The outwash plain is associated with the valley glaciers. This is also correct. Outwash plain is always जदि हम देखिबा कि जदि your glaciers are main, right? Please slide off option, sir. D is not showing. D is not showing. It is the D अच्छी रे. This is clear. D तो देखा हो रे एटी. The outwash plain is associated with the valley glaciers. I think it is visible here, right? 80. So answer जदि हम देखिबा it is a closed system बिल्कुल नो. मन रखो glaciers is an open system because there is an energy exchange between the surrounding and the glaciers. हैला energy transfer it is देथला wrong से जो answer हबो काहे केटा मु कहली it is an open system, it is a closed system रखिदेला, it is closed system no, this is an open system. Open system कौन पे because your why because exchange of heat energy हैला exchange of heat between the system and the surrounding से जो नले glacier तो melt हबो, right? So that is why answer is A. Correct? A is the correct answer, right? Second देखिबा 7 number. In India, the problem of soil erosion is associated with in India, the problem of soil erosion is associated with which among the following? That is your terrace cultivation, desertification, deforestation and tropical climate. India the problems of soil erosion. Soil erosion in India जो हमारा soil erosion होची इटा associated हिची कहाँ संगरे? Terrace cultivation, terrace, deforestation, tropical climate, है ना? Tropical climate. So answer है ला 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3, 1, 2, 3. किए दो answer? भला आपरे पढ़ो. Either मु कहली कि terrace और deforestation, then deforestation खाली, then terrace और tropical climate और तीनटा जगह terrace, deforestation and tropical climate all are correct. अच्छा MS आंसर दो आज A 1 and 2 इंडिया रे soil erosion पे terrace और deforestation तमे कहूँ. Okay, very nice. Next others. एक दिन एक question ना बहुत ही this type of questions helps you in your building your conceptual block. जो हम देखो conceptual understanding rate है कि soil erosion पे ये इंडिया रे problem खास करी. There are numerous problem but इंडिया रे कोटा specific होची. अच्छा जदि मु आंसर देखिबी हला A आंसर दोचो बाकी आंसर जदि तमे देखिबो it is neither terrace cultivation neither tropical climate, only deforestation. Answer is B for Bombay. मन रखो terrace cultivation माने सोपानो चाष थाको this is terrace. Terrace cultivation is basically for terrace cultivation is basically for your to check the soil erosion. ये तो उल्टा है गेला. अरे पहाड़ लैंड रे कौन पे टेरेस कल्टिवेशन कर जे सो दैट कौन हबो सेठी फार्मिंग हबो माने you know the more the grasses and more the vegetation it will check the soil erosion, it will check the surface runoff से जुगु हैला टेरेस कल्टिवेशन तो बिल्कुल भी हबनी. Tropical climate there is no nothing there is no association of that one to directly link to the question. So answer जदि देखिबो it is deforestation. काहे कि deforestation हले basically the roots of the plant they generally grip the soil को ସେମାନେ tightly धरि थांती. जेतले deforestation हे जाय माने forest जेतले काटी दिया जाय I mean there is your fall of trees तो सही समय कौन हुए तो माटी लूज हो जाए and it causes the your soil erosion. I hope it is clear to everyone, right? So answer is B for Bombay, right? Next question. भला पे पढ़ो. Which one of the following is not correct about the bad land? Bad land विषय की correct no. Number 1, bad land is a rugged topography, usually relatively low relief. मुकाम कहली low relief. Second, bad land is associated with the wetlands. Next, bad land is devoid of vegetation. D, bad land is associated with arid and semi-arid regions. Answer कौन दो? A, B, C, D. Yes. Questions वाला पढ़ो. This question seems to be
बहुत माने जना पड़छि कि बहुत छोट माने इजी but it holds immense it holds immense concepts. Yes, anyone can say. Is not correct about the bad line. Yes, देखो एटी जदि कहबा bad line is a rugged topography, this is हला it is correct. It is an yes, it is a rugged topography. Answer की A दोचो की nothing. Okay. Then bad land is associated with the wetlands. Of course, there is a numerous examples is also they are associated with the wetlands, right? Bad land is a devoid of vegetation. 8 भूलेगा. Bad land रे vegetation अच्छी. Bad land रे vegetation अच्छी. अच्छा, it's not devoid of the vegetation. Then bad land is associated with the arid and semi-arid region. Absolutely correct. यार सबूर गोटी example देबी. That is none other than your Chambal Valley in India. Chambal Valley, Madhya Pradesh रे. This is bad land. This region जो तुम कहबी, this is your bad land. Chambal Valley. Chambal Valley, Madhya Pradesh रे. Chambal Valley is in उठी MP, Madhya Pradesh रे. Chambal Valley is in MP, Madhya Pradesh रे. को भी जिनसे इतना पढ़ुचो, just you have correlate with. I'll always suggest whenever you study anything, just correlate these things with your fundamental image. जदि mind रे clarity रहिबो, definitely you will solve the questions. एक question टाको चारि प्रकार रे बना जाई परि मन रख. ट्रिक्स सब बेले काम करे प्रिलिम्स रे, सिविल सर्विस एग्जाम रे प्रिलिम्स रे होई. जदि तुम एगुडा करूचो, सेम थिंग जदि कोटेड मेंस रे भी क्वेश्चन आसला आगो मु राइटिंग सेक्शन भी नेबी, राइटिंग सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन रे भी तुमको बहुत जिंस मु सिखेबी सेतरे. राइट, जेतरा हम करूचन सेही कांसेप्ट हम केमती मेंस रे यूज करबा, सेम कांसेप्ट अनि केमती हम इंटरव्यू रे पचाले कहि परबा. दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल स्किल्स. आई ऑलवेज बिलीव इन दैट पॉइंट. राइट, सो निज भितर से करिया पड़े, एवरी डे पाठ पढ़िया पड़े, जानिया पड़े से जिंस ऊपर. राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जीवा. अगेन the seasonal reversal of wind is the typical characteristics of equatorial climate, Mediterranean climate, monsoon climate, and D, all of the above climate. Which one? The seasonal reversal of winds is the typical characteristics of equatorial climate, Mediterranean climate, monsoon climate, all the above climates. Yes, anyone can say. Mukali seasonal reversal of winds. Seasonal reversal of winds. Equatorial, Mediterranean, monsoon, kimba all. Kia bhituru. 1, A, B, C, D. Yes, anyone can say. You are choosing as C is the correct answer. Okay. Jadi dekho, this is very easy. Yes, it is correct. Jadi hum dekho, C is the correct answer. Monsoon climate is the correct answer. Monsoon. Right? Monsoon yes, it is correct answer. Correct answer is yours C. Very good, MS. एटा करो assertion reasoning गोटे. Assertion देछि मन देखि सुनो. Migration is the movement of people across the regions and territories. कौन क्वेश्चन पचाली? Migration is the movement of people across the regions and territories. First. Second, reason देला कौन? Across the second reason dela कि migration can be external or international. अब इधर आंसर कौन होगा? Both A are true. A and R are true. माने assertion भी correct, reason भी correct. But R does not explain A. Then next dela A is true but R is false. Third, both A and R is false. D, both A and R are assertion reasoning are correct and R explains A. Yes, answer की दे परियो. दोचो MS दोचो answer is D. Both A are true and R explains A. Yes, anyone else? Answer जदि हमें देखिवा एठी. Answer जदि हमें देखिवा आ विदर correctness कोटा. प्रथमे जानिबा कोन. Migration is the movement of people across the regions and territories. This is absolutely true. Eta me janle. Yes, migration माने people migrate in search of job
there are various reasons, mainly like opportunities, maybe this is an war, maybe because of the climate. Okay, so migration, this is true. Next देखो migration can be external or international. एठी भूल है गला हैला migration मन रख दी टाइप रो गोटे हैला विद इन कंट्री आ गोटे हैला आउटसाइड द कंट्री माने कंट्री रु आ गोटे हैला माने जदी हम कहबा कि जदी एठी देथांदा एक्सटर्नल and internal, it is international दे दम, right? So migration can be domestic and migration can be foreign, means I mean international. गोटे स्टेट रु यूपी रु लोक आछुंदी ओडिसा को, ओडिसा रु लोक जाउछुंदी यूपी को, दैट इज कॉल्ड योर डोमेस्टिक इंटरनल. बट ओडिसा रु यूएस को जाउछुंदी, यूपी रु लंडन को जाउछुंदी, यूके को जाउछुंदी, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल, राइट? ताकि कहंती इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, राइट? ए टाइप रो कांसेप्ट डेफिनेटली क्लास रे बहुत ही जिंस होवे. देखो सिविल सर्विस में कहबे ना इट्स वेरी इजी एग्जाम, बट प्रोवाइडेड वी हैव टू बी वेरी फोकस कि को जिंसटा हमको धरिबार अछि, राइट? सिलेबस तो बहुत ह्यूज. ओके, कहबे आरु का अनाउंस करबी क्लास रे जीएस क्लास रे वी हैव फॉलो दैट्स वन, इवन इफ ऑप्शनल क्लास रे द फॉलो अप्रोच मींस आई मीन द डेप्थ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अप्रोच, दैट इज व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड वर्तमान रो कंटेम्पररी चेंजिंग ट्रेंड ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम्स, राइट? सो एटा हला तमरो आंसर कोन रहइबो, सो एटी फॉल्स हेगला, दिस इज योर फॉल्स. सो आंसर एम कोन जीवा ए ट्रू आर फॉल्स, कोठी अछि आंसर इज योर बी फॉर बॉम्बे, मन रखो हला. सो एटी हम कोन जानले माइग्रेशन इज ऑलवेज हला इंटरनल माने आई मीन डोमेस्टिक एज वेल एज हला इंटरनल एंड इंटरनेशनल. एटी जदी देला एक्सटर्नल एंड जदी एटी थांता कोन एटी भूल गेला, एटी जदी इंटरनल थांता इट कुड हैव करेक्ट, किंतु जेहेतु एटी इंटरनेशनल दे देला एटी भूल गेला. एमती चला. दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी केम, आई डिडंट से दिस मु एटा दिस क्वेश्चंस आर ऑलरेडी केम. एटी जो इंटरनल पिला कोन करते जल्दी जल्दी जाउथबे भूल जे, इट इज नॉट इंटरनेशनल, इट इज इंटरनल. ऑलरेडी एक्सटर्नल माने तो बाहर, सो इंटरनल एक्सटर्नल ता माने हला डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल हला. सो ज्योग्राफी रे एतिकी. एबे एनवायरनमेंट रास करबा. एनवायरनमेंट इज वेरी आल्सो इंपोर्टेंट, राइट? yes ms हला एमिग्रेंट्स आर इमिग्रेंट्स दीटा जानता हला, दीटा दिन से हमें कहा जाए एटी एमिग्रेंट्स, ठीक अछि एमिग्रेंट्स, ठीक अछि एमिग्रेंट्स औ इमिग्रेंट्स, ठीक अछि एमिग्रेंट्स औ इमिग्रेंट्स. एमिग्रेंट माने कोन एई कंट्री हला, एमिग्रेशन माने आमो कंट्री रु जे बाहर कंट्री गोला ताकू कहंती एमिग्रेंट. इमिग्रेंट माने कोन बाहर कंट्री को जो लोक माने आसिले, जेंति इमिग्रेशन काउंटर तुम देखियो जीवो माने तमरो एयरपोर्ट को जीवो देखियो इमिग्रेशन काउंटर माने बाहर कंट्री रु जेंति हमरो ओडिसा को आसिले, दैट इज इमिग्रेशन हला. बाहर कंट्री आमो कंट्री रु बाहर को जोटा गले सेटा हला इमिग्रेशन, ठीक अछि. ओके, एनवायरनमेंट क्वेश्चन करिया. फर्स्ट क्वेश्चन करो, which vulnerable animal species has been spotted for the first time in Nagaland? First time in Nagaland. किए clouded leopard, marble cat, snow leopard, then your ocelot. किए रहइबो? Which among the following animal species has been spotted for the first time in Nagaland? Nagaland. Answer दियो. Anyone can say. First time in Nagaland. अरे भूल हो ठीक हो दियो किछि सेमते असुविधा नै, थोड़ी इथरे हे गेले तमरो माने ओपीएससी रिजल्ट बाहर जो माने आई मीन तमरो मार्क मु बाहर कर नो. देखो फर्स्ट जदि हम आंसर दवा इठी, दिस द आंसर इज दोचो एमएस दोचो सर बी मार्बल कैट, मार्बल कैट. ओके ठीक अछि, भूल हो ठीक हो. जदि हम आंसर देखिबा इट इज नीदर ocelot, it neither snow leopard, neither marble, it is your clouded leopard. प्रथम थरो पई हला जोटा कि हमें को कलरा पत्रिया बाघ, क्लाउडेड लेपर्ड हला माने नॉर्मल जोटा कि को कि इट इज वेरियस क्लाउडेड लेपर्ड मींस वेरियस टाइप ऑफ कलर्स. प्रथम थरा पई एटा नागालैंड जंगल ले दिखाइतला हला वेरियस कलर्स. नेक्स्ट हाइड्रोफी हला, हाइड्रोफिस गैलिक्स इज एन रेयर सी स्नेक. मन रखो रेयर सी स्नेक has been spotted in which state or UT? Which state or UT? Number 1 Kerala, number 2 Maharashtra माने B, number C
गोवा नंबर डी आंध्र प्रदेश है सी स्नेक रेयर सी स्नेक कोडी दिखाई था केरला महाराष्ट्र गोवा आंध्र प्रदेश हु कैन से को जगह दिखाई यस एनीवन कैन से आंसर जदि हमें देखिबा अच्छा कहछो ए और सी मे बी ए केरला और मे बी गोवा ठीक अछि देयर इज कंफ्यूजन ओके नो प्रॉब्लम जदि हमें आंसर देखिबा इट इज रेयर सी स्नेक्स दैट इज आंसर इज योर it is neither Andhra Pradesh neither Goa nor Maharashtra answer is your Kerala right rare sea snake jodi hame dekhiba it is shown in your Kerala hydrophils right okay next third question karo बढ़िया क्वेश्चन टा इफ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयस सपोज तुम हिमालय रे ट्रैवल करछ इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द हिमालयस राइट you are traveling through the Himalayas right you are traveling through the Himalayas this is the correct picture is traveling through the Himalayas right so you are likely to see which of the following plants naturally growing there KT naturally growing KK number 1 oak rhododendron sandalwood क्या भितर select the correct answer using the code given below प्रथमे कहूची oak और rhododendron then B कहूची 3 only sandalwood right 1 C कहूची 1 and 3 माने oak और sandalwood और D कहूची all yes who can give the answer जदि तमे हिमालय रे ट्रैवल करछो which of the following plants naturally growing there की मते कहि पाली आंसर तमे कहूचो A अच्छा MS कहला कि sir it is A okay any other answer oak rhododendron सब प्रकार एग्जाम पे these are very helpful this all this analysis देखो आंसर जदि हम कहबा हला oak rhododendron और sandalwood प्रथम जिंस वाला sandalwood केबे भी नुह sandalwood is in tropical climate खास कर इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल ले जोटा कि तमे देखतो जो यू नो पुष्पा पिक्चर रे हला दिस इज सैंडलवुड सेठी देखा जाय माने कर्नाटका रा जंगल रे नीलगिरी कर्नाटका माने सेही एरिया रे नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटका आ केरला रे जो ट्राई जंक्शन पार्ट रे सेठी देखा जाय सेही टाइप रो जंगल सैंडलवुड बेसिकली हला ट्रॉपिकल ओडिसा रे भी हम देखा सैंडलवुड हला एठी देखो रोडेंड्रन इज बेसिकली हला तमर जदी देखिबो कि एटा हिमालयन वेजिटेशन जोटा कि उत्तराखंड रे जोटा हितला नेक्स्ट oak is also so answer jodi dekhibo it is answer is your A is correct answer eti tame answer dela A is correct very nice yes we can say in the deciduous forest absolutely right next 4 number karo the most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of biosphere reserve botanical gardens national parks wildlife sanctuaries क्या भितर हबो को most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life is the establishment of car कहि पारि biosphere reserve botanical garden national parks and wildlife sanctuaries we can say yes anyone can answer most important strategy for the conservation of biodiversity together kahar ame nei pariba biodiversity together is the traditional human life is the establishment of kahar nei pariba देखो जदि हमें देखिबा यार करेक्ट आंसर जदि देखिबा it is neither wildlife sanctuary nor national parks nor botanical garden answer is your A बायोस्फीयर रिजर्व जो कांसेप्ट हमर अछि सी हबनी रे सी हबनी इट इज नॉट सी neither A neither B sorry neither C D एटा हबनी आंसर इज योर A is the correct answer काहे कि मु बुझौछि बायोस्फीयर रिजर्व जदि हम देखिबा बायोस्फीयर रिजर्व हला बायोस्फीयर रिजर्व हला मैन को कांसेप्ट रे इट इज एन यूनेस्को हला यूनेस्को हेरिटेज यूनेस्को रो कांसेप्ट रे यूनेस्को रो साइट रो हला यूनेस्को हेरिटेज रो मैप कांसेप्ट कोडा बना होछि map concept means man and biosphere right eta hala sei concept ठीक अछि so biosphere reserve is the correct answer ठीक अछि देखो concept clarity टा बहुत important हला जोटा कि एथरे हमें हला through discussions we know अच्छा next fifth number question करो
which one of the following is the correct sequence of a food chain? That is your diatom, crustaceans and herrings, then crustaceans, diatom, herrings, then diatoms, herrings and crustaceans, herrings and diatom. It is sorry, it is diatom ta it is diatoms, it is spelling ta erase he jaisi hela mistakenly hela edi कोटा हबो आंसर Bhabhi ji, the answer diyo. This is a very good question, very conceptual question. This is very conceptual. Is the correct sequence of the food chain? पचारची कौन food chain रे? Food chain एटू पूरे purely जाना पड़ची ए जो food chain टा एटा हला तुम्हारा aquatic food chain. वो आउरी hint दे दी. Aquatic food chain. This one is your aquatic food chain. की कही परियो? Anyone can say. देखो आंसर जदि मु कहबी या भितरु करेक्ट आंसर छला कि डिफिकल्ट लागतो बट अंडरस्टैंडिंग पे बहुत इंपोर्टेंट आ जदि करेक्ट आंसर देखिबा मु एटी कहूची दिस इज एटा हबनी डी प्रथम जानिबा डाई एटम कोन हला मु आ पूर्व कहूची लेटेस्ट मु एटा लिबे दोची आ पर जानिबा कांसेप्ट डाई एटम कोन डाई एटम हैला छोटो छोटो सिउली algae ठीक अछि algae और शैवाल जातीय डाई एटम्स साको कोन दिस मे बी स्मॉल दिस वन राइट स्मॉल एटम हम कहि परबा स्मॉल algae या परे जदि हम देखिबा क्रस्टेशियंस कोन हबो क्रस्टेशियन माने छोटो छोटो जो शामुका जातीय वी कैन से द स्नेल वी कैन से द श्रिम्प छोटो छोटो माछो हला देन हेरिंग्स हला बडो माछो सिल्वर फिश लार्ज हला योर सिल्वर फिश वी कैन से सिल्वर फिश राइट दिस इज एटा कहबा दिस इज वी कैन से द स्नेल हला एटा एंड दिस इज योर algae तो एटी कोन रहइबो algae स्नेल खाइला आकु then snail को खाइबा silver fish हला these are the small so food chain टा जदि देखिबो this is the correct एटा केबे भी न crustaceans herrings diatoms no this is wrong this is also wrong हला herrings हम जदि तमे देखिबो हमर जदि ecological pyramid नबा pyramid रे ecological pyramid रे एटम कोन कहली this is your ecological pyramid हला ecological pyramid right pyramid एटी कोन नेले एटी प्रथम देले की रहला टॉप रे की रहला एटी रखला हमर diatoms then second रहइबो crustaceans then your herrings these are the correct so ecological pyramid ta upar this is the top hela top re ki rochi this is the C so correct answer is your A is the correct answer man rakho A is the correct answer herrings hela ecological pyramid re food chain hela food chain this is your food chain re amar rochi this is at the top now it is clear to everyone hela it dekho now it is clear to everyone this is ecological pyramid right this is ecological pyramid food chain re eta jauchi top re ye rochi ke herrings re ठीक अछि ओके सो आज पे सेशंस रति की किछटा अनाउंसमेंट म करूची कि ऑलरेडी general studies batches has already commenced hela that it has started from last more than 2 and 3 months hela more than near about 2 to approximate 3 months se jo so all subjects we are covering and of course the fundamental aji bi mu kahi civil service re concepts dominates right and offline jo classes they have got you can feel the exact environment that helps you in the exam also that kind of mind setup okay I never deny that one but offline is the batch already started those who have okay not access there got various problem they can go for some hurdles or your constraints are there then online is okay but offline batches we have already started at the Odisha Civils here next our geography optional batches has already started as I said earlier also geography optional batches online batches UPSC पे already start ही गलानी है ना last month through ठीक है जी geomorphology has completed now we are going to the climatology anything those are interested they can call me over WhatsApp me also 7978090 and 972 this is my number you can text me or WhatsApp right also UPSC रा offline batch also started for optional geography optional है optional रे तो offline रे UPSC रा and online रे OPSC रा right any interested they can directly access to me also the जदि देखिबा कि test series also moving on test series भी हमरो also okay test series also going on
GS रो हो कि ऑप्शनल्स रो हो, राइट? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन, विल मीट अगेन ए टाइप रो जो दोच मु, ठीक अछि, विल जते जते प्रैक्टिस करे आहुरी नेक्स्ट वीक रे पूरी सब वीक रे जेमति हमर गोटे रिलीजियस रे प्रैक्टिस करछु, विल डेफिनेटली विल गो फॉर दिस प्रैक्टिस, हैला ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस रखिबा। आउ नेक्स्ट पुणी हमें न्यू कॉन्सेप्ट्स आउ जेमति भी राइटिंग स्किल्स हो कि योर कॉन्सेप्ट्स इन ज्योग्राफी हो कि ऑप्शनल हो, डेफिनेटली विल कम थ्रू दिस वन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, thank you all of you, thank you for all your cooperations, okay, thank you all of you, thank you all for your patience, thank you, we'll meet again, thank you, Jai Jagannath, thank you, thank you, thank you all of you.